ओके, अप्रॉक्स यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो टाइप ऑफ ब्रेन्स है, ठीक है, उनके ईच पार्ट्स के फंक्शंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर साइनेप्सिस है, जब एक क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं अप्रॉक्स हम यहाँ पर 18 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आया हूँ। तो यहाँ से देखते हैं। और क्या है कि नहीं, ये पूरा जो एनसीईआरटी में एंटेक्स क्वेश्चन एंड जो उसका एक्सरसाइज है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज an involuntary action such as a rapid and automatic response to stimuli, while walking is a voluntary actions while require our thinking and in is in our control. Okay, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओके, what happen at the synapse between two neurons। तो यहाँ देखेंगे, a synapse is the gap between two neurons. At the synapse the electrical signal are converted into chemical that can easily cross over to gap and pass on the next neuron, where they are converted back to electrical signal। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ओके, ऐसे चेंज होती है इन्फॉर्मेशन, तब क्या होता है, ये आगे की ओर मूव करता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर्स एंड एक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। वेरी गुड है, यहाँ पर सेरेबेलम आने वाला है। ओके, सेरेबेलम इज राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन एग्रेटिव। तो यहाँ पर क्या है, आंसर होगा, व्हेन द स्मेल ऑफ द incense stick reaches our nose, the olfactory receptor present in our nose detect it and send this information to the forebrain in the form of electrical signal. The forebrain interprets this information as the smell of an increased stick based on information already stored in it. Okay, next question, what is the role of the brain in reflex action? What is function of what is the role of the brain in a reflex action? The brain has no direct involvement in a reflex action. It is mainly controlled by spinal cord, as these actions do not require thinking, are very quick. Okay, next questions, what are plant hormones? What are plant hormones? Plant hormones, also known as photohormones, are chemical fluids secreted within the plants. They regulate the growth and development of the plants. Example of plant hormones include auxin, gibberellin, cytokinin, etc. Okay. Next questions. How is the movement of leaves of the sensitive plant different from the movement of a shoot towards light? Okay, next question answer. Okay, the movement of the leaves of the sensitive plants is a response to touch means nastic movement. Okay, and the independent of the growth in concentrate the movement of a shoot towards lights mean phototropism is a growth related movements. Okay, give an example of plant hormones that promote growth means auxin. Auxin is present in tip of shoot and root. Okay, next question है, how do auxin promote the growth of a tendril around a support? Okay, ठीक है। When a tendril comes in contact with a support, the part of tendril in contact with the object does not grow
as rapidly as the part away from the object. This is caused by the action of oxygen hormones. Less oxygen accumulates on the side of contact compared to the free side. As a result, oxygen promotes more growth on the free sides, causing the tendril to coil around the support. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होने वाले हैं। यहाँ पे Dyson an experiment of determinate hydro so design an experiment to demonstrates hydrotropism. Hydrotropism means when part of plant move toward water are called hydrotropism. Okay, ठीक है। तो व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म? यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में आपको मेनली रूट रूट क्या होंगे, ठीक है, क्या होंगे, वाटर के साइड क्या मूव कर जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर मैं काम नहीं करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज, ठीक है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स? ओके, chemical coordination takes place in animals with the help of hormones. Hormones are chemical fluids that are secreted by the glands of the endocrine system. Hormones regulate the overall growth and development of the animals. Okay, okay. Next questions. Okay, why is the cause of iodized salt advisable? Okay, iodine stimulates the thyroid glands to provide thyroxine hormones. It regulates carbohydrate, fat, and proteins metabolism in our body. Deficiency of these hormones result in the enlargement of the thyroid gland. This can lead to goiter, a disease characterized by swollen neck. Therefore, iodized salt is advised for the normal functioning of the thyroid glands. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड? ओके ओके, एड्रेनलिन जब सिक्रेट होता है है तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ठीक है। व्हेन समवन इज इन danger or an emergency, the adrenal gland secrete adrenal hormones. It is secreted directly into the blood and it transport to different part of the body. It speeds up the heartbeat and hence supply more oxygen to the muscles. This result in an increased breathing rate and blood pressure, which enable the body of fight such as urgent situation. Okay, you understand about this questions? Okay, next questions, why are some patient of diabetes treated by giving injection of insulin? Okay, ठीक है। डायबिटीज इज काज्ड ड्यू टू द लेस आर नो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इंसुलिन बाई द पेंक्रियाज। इन सच ए पर्सन द ब्लड sugar level is high. Insulin converted extra sugar present in the blood into glycogen. Thus, patients suffering from a diabetes are given insulin injection to control their blood sugar level. Okay, okay. MCQs questions. Okay, फटाफट, which of the following is the plant hormones? Insulin, thyroxine, estrogen, and cytokinin. Cytokinin is a plant hormones. It help in cell division. C for cytokinin and C for cell division. Okay, next question पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, the gap between two neurons is called synapses. Okay, answer is synapses. Okay, gap between two neurons are called synapses. Okay, the brain is responsible for, okay, responsible for thinking, regulating the heartbeat, balancing of the body, all of the above. Then all of the above. Okay, next questions, what is the function of receptors in our body?
think of a situation where receptor do not work properly. What problems are likely to arise? Okay. uh, Functions of receptors. They sense external stimuli such as heart, pain, heat, pain, smell, taste, etc. They trigger an impulses in the sensory neuron which send a message to the spinal cord and brain. When receptors are damaged in the external stimuli, transforming signals to the brain are not felt. For example, in the case of damaged receptor, if we accidentally touch a hot object, our hand might get burnt, and damaged receptor cannot receive the external stimuli of the heart and heat and pain. Okay. Next question, draw the structure of neuron and explain its function. This is very, very important question for this chapter. Okay. Okay. ओके, क्वेश्चन का आंसर। ओके, फटाफट आपको डायग्राम बताया, ठीक है। इस डायग्राम को आपको ड्रा करना है, ठीक है। स्टार लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर होने वाले हैं आपको। न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन, नर्व एंडिंग एक्सेट्रा। ओके, you draw, and what is the function of each part? Okay, dendrites, cell body and axon. Dendrite is a dendrites में क्या होंगे? It receives information from the axon of another cells and conduct the messages toward the cell body. Okay, and cell body, what is function of cell body? It is contain the nucleus, mitochondria and other organelles. It is mainly concerned with the maintenance of growth and of the neurons. Okay, axon, it is conduct a message away from the cell body to the next neuron or the muscles or glands. Okay. Okay, next questions. What is next question? Okay, next question, how is the phototropism occur in plant? हाउ। ओके, फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है। ट्रॉपिज मीन्स मूवमेंट। ओके, यहाँ पर होगा लाइट की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होने वाला से क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज। ओके, तो यहाँ से आपको मालूम है जो शूट होते हैं वो क्या करते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज, एंड रूट जो होते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज शो करते हैं। ओके, और इसी केस में क्या होगा? जो सूट होते हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज शो करते हैं, एंड रूट क्या होते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज शो करते हैं। ये आपको मालूम चाहिए, एमसीक्यू में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ओके, आंसर लेते हैं। व्हाट इज फोटोट्रॉपिस? द ग्रोथ मूवमेंट इन द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस इज नोन एज फोटोट्रॉपिस। The shoots show a positive phototropis and the roots show negative phototropis. This means that the shoot bend towards the source of light, whereas the roots bend away from the light source. Okay, this is caused by the hormones oxygen which diffuse to the shaded side of the shoot, promoting cell elongation there and causing the shoot to bend towards the light. For example, the flower head of the sunflower is positively phototropic, and hence it move from east to west along with the sun. Okay, clear. Question next, which signals will get distributed in case of spinal cord injury? Okay, in case the spinal cord injury, the signals coming from the nerves to brain as the signal from the brain to the receptors will be distributed, since nerve signal from the body meet in a bundle in a spinal cord to reach to brain. A spinal cord injury can dispute both sensory and motor signals. Okay, how does chemical coordination, how does chemical coordination occur in plants? Okay, chemical coordination occur in plants with the help of plants hormones. Different plant hormones help to coordinate growth, development, and responses to the environment. They are sensitized at place away from where they act and diffuse to the area of for actions. For example, auxin promotes cell growth, gibberellins promote stem growth,
and cytokinin promotes cell division, and abscisic acid inhibits growth with affecting including the wilting of leaves. Okay, next questions. Next question है, what is the need for a system of control and coordination in an organism. Okay, an organism has various organs that must be carefully controlled and coordinated for its survival. In the body of an organism, various hormones are secreted from the glands of the endocrine system, which are responsible for overall growth and development. Other daily decisions, including voluntary and involuntary actions, are controlled by the central nervous system, means CNS. Okay, this entire system is needed to ensure that all parts of the body work together efficiently in response to internal and external stimuli. Okay, however, voluntary actions and reflex action different from each other. Okay. However, involuntary actions and reflex action different from each other. This is very important questions, and see and read this question answer. Okay. In involuntary actions is a set of muscles movement that do not require thinking but are controlled by the brain. For example, the breathing of the heart. Okay, on the other hand, a reflex action is a rapid and spontaneous action in responses to a stimulus, which is controlled by a spinal cord. Example, closing of eyes immediately when bright light is focused. Okay. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग इन एनिमल्स। ओके, आंसर। ओके, इसका आंसर हम लोग सी करते हैं। ओके, nervous system mechanism and hormonal system mechanism. What is function of hormonal and chemicals? Okay, nervous system, it consists of nerve impulses between PNS, CNS and brain. Okay, but hormonal system mechanism, it consists of the endocrine system, which secretes hormones directly into the blood. Okay, and nervous system, the axons and the axon and dendrites transmit the information through a coordinated electrical effort. But हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म में क्या होता है, द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और transferred through the blood. Okay, and next point, the flow of information is rapid and the response is quick in the nervous system mechanism. But hormonal में क्या होता है, the information travels slowly and the responses is very slow. Okay, and nervous mechanism system में क्या होने वाला है, nervous impulses are not specific in their actions. But hormonal system में each hormones has specific action on the target organs. Okay, and the next point, in the nervous system, effect are short lived, but hormonal में क्या होता है, it is a prolonged effects. Okay. Okay, next questions. Okay, question, what is the difference between manner and in which movement takes place in a sensitive plant and movement in our legs? Okay. Okay, movements in sensitive plants and movement in our legs. The movement the movement in a sensitive plants in a response to stimulus, which is an involuntary non-growth movements, but movement in our legs in a voluntary actions controlled by the brain. Okay, and the next point, movements in the plant, no special tissue is there for the transfer of information, it is transferred cell to cell. But legs में क्या होने वाला है, a complete system, serous and penis is there are for the information exchange. Okay, and next point, plant cells exchange shape by changing the amount of water in the
in them they, okay, but animal cells have specialized proteins which help muscles, okay. uh, mo- uh, नेक्स्ट इसमें से डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फॉर मूवमेंट इन द प्लांट बट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉज मूवमेंट, ओके। इसमें जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसी के चक्कर में क्या होता है, मोशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको क्या कर दिया, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस अप्रोक्सली मैंने यहाँ पर करवा दिए, जितने भी आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन थे लगभग यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, साथ में जुड़े होंगे तो आपको कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिया, ठीक है, ओके। वन चैप्टर का जितने भी था पीछे का मैंने उस सारे को सारा करवा दिया, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक